to go across to Mr. Rahul Ishwar joining us on the broadcast. Mr. Ishwar, do you agree with what Mr. Swamy says when he says that, the centers perhaps not serious about this issue is why there is a repeated delay that is being made? Because earlier as well, they were given time by the court to come out with a reply. Failing to do so, now the deadline has been set to 31st October. Dr. Subramanian Swamy is a great warrior for Dharma. We all respect and have immense respect for him. But as a Hindu activist too, there are many nuances to this. As we all know, we all want Kashi, Mathura and Ayodhya to have the restored glory. There is no doubt and debate regarding that. At the same point of time, we should not let our Muslim brothers go into a panic mode, because Muslim community is very sensitive about Places of Worship Act. We all know back in 1991, Rao government enacted this because it was the height of the Ram Mandir movement, and before the unfortunate destruction of Gyanvapi Masjid, it wanted to seal all the other places. This was the intention. But even from that time, moderates from the Hindu community have been asking for Kashi, Mathura, Ayodhya, these three being Janmasthans, holy spots, these cannot be changed. So there will be some kind of understanding, out of the court understanding and amicability between both communities. Even recently, Pujaniya Sarsanchalak Mohan Bhagavatji went on record to say that yes, Mathura is very sensitive, Kashi is very sensitive. At the same point of time, we need not go to search for a Shivaling under every mosque. So I would urge our Muslim community members to listen to K.K. Muhammad, an eminent archaeologist who rightly points out, talk to your Hindu brothers about two temples, especially Kashi and Mathura. Let us have a debate regarding it. Let us go to some kind of consensus. It will only inspire pluralism and harmony. As a Hindu activist, I respect our Muslim brothers' sentiments when they say it's a Pandora's box. If we open it, there can be thousands of claims. Nobody sensible is going to raise thousands of claims. But Kashi and Mathura is very sensitive because they are Janmasthans to Bhagavan Sri Krishna, and Har Har Mahadev is one of the core promises. So it's a very tricky, sensitive issue. And there are many people, our Muslim community members, really believe in from the Hindu side. People like Sri Sri Shankar, various saints, various sages and spiritual gurus. We need to have an amicable solution. Let us not brush it under the carpet. These are very sensitive issues. And I hope Indian government will come up, Modi-ji government will come up with an affidavit in the Honorable Supreme Court with a very balanced view, pointing out the importance of Kashi and Mathura, at the same point of time, not destroying Peoples of Worship Act. There can be modification and addition in people's Places of Worship Act by adding Kashi and Mathura. That might be a sensible intervention and a sensible consensus everyone can agree on. Okay, let me quickly take in a word once again from Harish, who's been tracking all the latest from the court, and then I'll come back to you, Mr. Ishwar. Harish, very important that the court says that we need a reply from the centre, says that they file an affidavit and respond to the 11 queries raised by Mr. Rakesh Dwivedi, arguing for Ashwini Upadhyay in this very case. So just to put this in perspective for viewers tuning in, if you could just break down the 11 questions raised by the petitioner. Yes, in fact, some of the key questions framed by Harish, I'm going to have to interrupt you there. I need to take in a word from Mr. Ashwini Upadhyay, who's joining us on the phone line. Good afternoon, sir. Thank you for speaking to Times Now. We heard from the top court. The court has now given 31st October as the deadline to the centre to come out with a response, has asked them to file the affidavit. Your first thoughts, because the 11 queries posted by you have also been asked by the top court to the centre to come out with a response on the same. बिल्कुल, हमने यही कहा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना के हमारा जो राइट टू रिलीजन है उसको छीन नहीं सकता, राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन नहीं छीन सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना के इलीगल एक्ट को लीगलाइज नहीं कर सकता। जो काम हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, तुगलक ने किया, उनके गलत कामों को लीगलाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोर्ट का दरवाजा बंद कर देगा, इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। लोग अभी सबसे शांति तरीके से जो समाधान होता है वो कोर्ट के जरिए होता है। ये कानून बना के सेंटर ने 1991 में कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया। जब कोर्ट का दरवाजा बंद हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म होगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा, लोग लाठी डंडा लेके उतरेंगे। वो ठीक नहीं है इस देश में, अगर सड़कों पर लोग उतरे तो जो पीसफुल किसी चीज का रेजोल्यूशन होता है, किसी डिस्प्यूट का जो सोल्यूशन है, वो थ्रू द कोर्ट है। अनफॉर्चुनेटली सेंटर ने कानून बना के कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया। इस तरीके के मैंने 11 सवाल फ्रेम किए थे। और दूसरा, वैसे भी पिलग्रिमेज स्टेट लिस्ट में आता है। पिलग्रिमेज के ऊपर कानून बनाना स्टेट की ड्यूटी है, सेंटर की ड्यूटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में काम का बंटवारा है। तो इसमें इस मामले में तो बाकायदा पार्लियामेंट ने अपनी जो पावर है, जो उनका एरिया है, उसको ट्रांसग्रेस किया। वो अपने उसके कानून के दायरे में बाहर जाके बनाया है। इसलिए इस तरीके का कानून सेकुलर कंट्री में जहां रूल ऑफ लॉ है,
जहां हर डिस्प्यूट जो है कोर्ट के जरिए हल होता है, वहां ऐसा कानून बनाना पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की और खासतौर पर उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो हमारे 11 जो क्वेश्चन हमने फ्रेम किए थे उसको अपने ऑर्डर में डिक्टेट करा दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी बोला कि ये जो 11 क्वेश्चन हैं इसको भी आप रिस्पॉन्स करो कि ये 11 क्वेश्चन पे आपकी क्या ओपिनियन है। जी उपाध्याय जी, हमारे पास जानकारी आ रही है कि मीटिंग अभी चल रही है और इस पे निर्णय लिया जाएगा सेंटर की तरफ से कि क्या ये एफिडेविट फाइल करेंगे या असिस्ट करेंगे कोर्ट को। तो आप क्या समझते हैं? हमने मिस्टर स्वामी से भी बात की कुछ ही देर पहले, वो कह रहे थे कि ये डेलिब्रेट डिले क्यों हो रहा है। वो सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि ये दिखा रहा है कि सेंटर सीरियस नहीं है इस इशू को लेके। आप क्या समझते हैं? इनफैक्ट हम तो सेंटर की रिप्लाई को प्रेस नहीं कर रहे थे, सेंटर की रिप्लाई तो जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेस कर रहा है। ये दिस इज अ बेसिक डॉक्ट्रिन, जैसे हिंदी में कहते हैं ना मौनम स्वीकार लक्षणम, वैसे इंग्लिश में एक जुडिशियल डॉक्ट्रिन होती है, उसको कहते हैं साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। हमने 2020 में इस कानून को चैलेंज किया, 2022 तक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर काउंटर फाइल नहीं कर रहा, अपनी रिप्लाई नहीं दे रहा, इसका मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम, इसका मतलब साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, इसका मतलब जिन ग्राउंड्स पे हमने उस कानून को चैलेंज किया है सेंटर उसको एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब जो हमारी प्रेयर है, क्या आप समझते हैं कि वो एक्सेप्ट कर रहा है उन ग्राउंड्स को, या आप समझते हैं कि थोड़ा दुविधा में भी है क्योंकि एक बैलेंसिंग एक्ट मेंटेन करना पड़ रहा है सेंटर को फिलहाल? नहीं, मैं किसी के मन की बात नहीं जानता, लेकिन जो लीगल डॉक्ट्रिन है दैट इज द साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। If you are not filing counter, if you are not responding, if you are not filing your reply, it means you are agreeing with my concern, you agree my ground, you agree with my prayer. This is the basic principle. It's a common principle. Silence is acceptance is a worldwide principle, not only the India's judicial system. जी, और उपाध्याय जी, बिफोर आई लेट यू, आप कहाँ देखते हैं इस केस को जाते हुए? 31 अक्टूबर का डेडलाइन सेट कर दिया गया है, उसके बाद फिर से हियरिंग होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाएगा। क्या ये 3 जज बेंच के पास जाएगा, 5 जज बेंच के पास जाएगा? तो अभी काफी लंबी सड़क है इस लड़ाई की बात करें तो। हमने तो आज पूरी तैयारी किया हुआ था और इसलिए कोर्ट से रिक्वेस्ट भी किया था, आप इसको टॉप ऑफ द बोर्ड शुरू कर दो। सेंटर कोर्ट ने हमारी मांग को कल एक्सेप्ट भी कर लिया था, आज इसको टॉप ऑफ द बोर्ड रखा, 10:30 पे इसकी हियरिंग शुरू कर दिया था। लेकिन जो जमीयत उलमा हिंद है और पर्सनल लॉ बोर्ड है, एक तो और ऐसे संगठन आए हुए हैं, इधर वो लखनऊ की टीले वाली मस्जिद है, वो लोग वो सेंटर के बहाने कि सेंटर की रिप्लाई नहीं आई, उसके बहाने उन्होंने अर्जन कराने की कोशिश किया है। चलिए कोई बात नहीं, अक्टूबर से नवंबर गया, लेकिन ये कितनी बार अर्जन होगा मुझे नहीं लगता है। उनके पास कोई ग्राउंड है नहीं, उनके पास एक ग्राउंड है, वो कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये सरप्राइज की, आश्चर्य की बात है, इस देश का मेजॉरिटी कम्युनिटी कभी नहीं धमकी देता कि हाँ अगर आप इस तरीके का कानून बनाओगे तो लॉ खत्म हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी खासतौर पर 2-3-4 संगठन है, वो धमकी दे रहे हैं कि नहीं अगर आप इस कानून को खत्म करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। अरे इस कानून को बनाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ, इतना घटिया कानून बनाने के बाद, तो घटिया कानून खत्म करने के बाद लॉ एंड ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा? जी, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, दंगे हो सकते हैं, ये कहा गया है AIMPLB की ओर से, पर आप काफी पॉजिटिव है that this is headed in the right direction so far as the case and your petition is concerned. Thank you, Mr. Upadhyay, for speaking to us on Times Now. Let me go back to Harish, who continues to stay on with us. Harish, we are being told that with regards to center now, mulling over what to do next, there is an information coming in that an important meeting is underway and a decision will now be taken whether or not the center will go ahead by filing an affidavit or just assist the court in adjudicating the issue. What more can you tell us about this? Yes, this is the indication given by my sources. Law Ministry who says that center has yet not decided whether to file an affidavit as per the direction of the court or just to assist the court in adjudicating the matter. Remember, even earlier there were very other sensitive issues in which the center has not filed affidavit, like in the Sabarimala case, in the 377 homosexuality matter, and even in the recent hijab matter, the center had not, the Karnataka government had not filed an affidavit but assisted the court. So in matters which it perceives to be sensitive, center has the liberty to do so. There have been precedents. So in a way, the Solicitor General Tushar Mehta, when questioned by the Chief Justice UU Lalit, said that even now the consultations are on. We are holding meetings whether to, in what capacity we have to respond to these
petitions. Remember, one of my sources said that the government is walking a tightrope. In fact, trying to come out with a very balanced act, because on the one hand it does not want to antagonize, it does not want to offend the 10 Hindu petitioners, and also large number of sections of Hindu community devotees who want this this act scrapped. On the other hand, the center also has in mind the plea of the Muslim community in form of Jamiat Ulema Hind and All India Muslim Personal Board, which has told the court that this scrapping of this act will instill fear in the mind of the community, which is still recovering from the Babri Masjid demolition and also the Ayodhya judgment of Supreme Court. And if this act is scrapped, it will also result in a floodgate of litigation against... Which, Harish, takes us back to the question of what the AIMPLB has stated when it has warned of law and order deterioration as far as the ongoing case goes. And for that, I want to bring in Rahul Ishwar into the conversation once again. Rahul Ishwar, with regards to the source-based information we're picking, what do you make of it? And essentially what has been pointed out by experts so far as well with regards to the delay in response coming from the center, do you think it's finding itself in a tough spot? It's walking on a tightrope given the severity of the issue here, because, this is essentially going to pave way for certain contentious issues that are ongoing still. Absolutely. As Harish ji said, and you also, ma'am, rightly said, that balancing act need to be there. Every nation needs order and balance. Without that order and balance, we cannot move ahead. I agree with Ashwini Upadhyay ji, who's a good friend, who's very senior to me, in saying that nobody can threaten regarding law and order. But at the same point of time, we should be mindful of the insecurities and inhibitions of our Muslim brothers, because India is the second largest Muslim population. So you believe it's of utmost importance that a balance is struck, and that's exactly where the center's finding itself in at the moment, and is why they're seeking more and more time.